सबसे पहले तो ओपी ग्रेवाल अध्ययन संस्थान का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये मौका दिया कुरुक्षेत्र आने का और यहाँ ये लेक्चर या तकरीर करने का। हम खुद ओपी ग्रेवाल साहब से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं थे, मगर जो कुछ भी उनके बारे में कल से सुना या इससे पहले भी जो कुछ सुना जो आज उन्होंने कहा, वो ज़ाहिर है यहाँ की बहुत बड़ी शख्सियत थे, यहाँ की बहुत अज़ीम हस्तियों में थे। और सबसे बड़ी बात है और जिसकी वजह से आप सब लोग यहाँ आए हैं वो ये है कि वो तरक्की पसंद या प्रगतिशील मूवमेंट्स और संस्थानों से जुड़े हुए थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि ये मौका दिया। और जैसा भी गासो साहब ने कहा कि हमको पहले ये अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ हिंदी में बोलना चाहिए, हालांकि मुझे सोचना चाहिए था कि हरियाणा में आ रहे हैं तो हिंदी में ही तकरीर करनी चाहिए, क्योंकि ये तो हरियाणा तो हिंदी का बहुत ख़ास गढ़ है एक तरह से। तो ये मुझे पहले सोचना चाहिए था, मगर ये मुझे कल ही ख्याल आया, कल जब मैंने बल्कि परसों जब सुरेंद्र कुमार साहब से बात की और गासो साहब से बात की तो उन्होंने कहा नहीं यहाँ तो हिंदी में होगा। मगर तो मुझे आप माफ़ करिएगा कि अगर हम कोशिश करेंगे कि हिंदी की अंग्रेज़ी और हिंदी उर्दू में मिला जुला के बोलें। जैसा कि आपको मालूम है ये हम जो बात करेंगे, थोड़ी बहुत जो बात करेंगे वो है डिसेंट प्रजातंत्र और मीडिया डिसेंट और प्रजातंत्र पे। तो इसमें मतलब बेसिकली जो हम इस भाषण में या इस लेक्चर में जो कहने की कोशिश कर रहे हैं वो 2 या 3 चीज़ हैं। एक तो ये कि मीडिया की जो अहमियत है प्रजातंत्र में, जमहूरियत में, वो ज़ाहिर है और हम लोगों का इसका अंदाज़ा अब और ज़्यादा हो रहा है कि मीडिया का कितना पिवटल और इम्पॉर्टेंट रोल है। मगर उसके साथ साथ दूसरी बात जो हम कहना चाहते हैं इसमें वो ये है कि मीडिया तो हिंदुस्तान में हमेशा बहुत इम्पॉर्टेंट था, हमेशा बहुत वाइब्रेंट था, मगर बहरहाल मीडिया का जो पूरा रोल है, उसका जो कैरेक्टर है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो स्ट्रक्चर ऑफ ओनरशिप है, वो विजुअल मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों की बहुत बदल गई है। एक तरफ तो हम लोगों के पास इतनी अब चॉइसेस हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है, मगर उसके साथ साथ एक नैरोइंग भी हुआ है पॉलिटिकल स्पेस का, चॉइसेस वगैरह का। और तीसरी चीज़ जो बहुत स्ट्राइकिंग है, जिसके ऊपर हमारा ज़ोर है इस तकरीर में, वो है कि जो मीडिया की रिलेशनशिप अब इस वक्त गवर्नमेंट से क्या है। हालांकि मीडिया बिल्कुल प्राइवेटाइज्ड है अब, पहले मीडिया इतना ज़्यादा प्राइवेटाइज्ड नहीं था, मगर अब बिल्कुल ही प्राइवेटाइज्ड मीडिया है। उसके बावजूद जो इस मीडिया का जो ताल्लुक़ और रिलेशनशिप है सरकार से, वो बहुत मुख्तलिफ है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये एक बिल्कुल एक नया कैरेक्टर है मीडिया का, और ये आपको और मुल्कों में और देशों में शायद ये नहीं नज़र आएगा। और तीसरी चीज़ जो इस तकरीर में है वो ये कि जो अब नई रिलेशनशिप है या जो नया ताल्लुक़ है मीडिया का सरकार के साथ, वो मीडिएटेड है कॉर्पोरेट सेक्टर से, और उसकी वजह से उसका असर जो डेमोक्रेसी पे या आप कहिए डिसेंट पे या इख्तलाफियत, जिसको उर्दू में कहते हैं, डिसेंट को इख्तलाफियत कहते हैं, तो जो इख्तलाफियत एक तरह से मीडिया और डेमोक्रेसी का तो बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, मगर अगर मीडिया जिस तरह का हमारे मुल्क में अब हो गया है तो आप सोच सकते हैं कि डेमोक्रेसी का उसके ऊपर क्या असर होगा। तो इस बैकग्राउंड में मैंने आपको बिल्कुल संक्षिप्त में 2-3 जो इसके मेन कंसर्न्स हैं वो आपको हमने बताए हैं। और अगर अब आप इजाज़त दें तो हमने जो इस मौके के लिए जो लेक्चर तैयार किया उसको पढ़ेंगे, मगर बीच बीच में थोड़ा बहुत हिंदुस्तानी में भी उसका तर्जुमा करने की कोशिश करेंगे।
The media plays a pivotal role in shaping the dynamics of a democratic society. In its various forms, media serves as both a conduit for information and a platform for dissent or matbhed or ikhtilafiyat. These are the two essential pillars upon which democracy stands. A robust media is indispensable for the functioning of democracy, as it facilitates the free flow of information, fosters public discourse, and allows for dissenting or different voices to be heard. This lecture today explores the relation, jaisa maine abhi kaha, explores the relationship between government and the way media has been treated essentially in the past 9 years or so, analyzing the new relationship between media and government for India's democracy, and finally highlighting the interdependence and challenges they collectively face, that is, the challenges that media faces and democracy or Prajatantra faces. Now, a free and independent media provides the space and resources for dissent to flourish. Dissent, in turn, supplies media with fresh stories, perspectives, and issues to cover. This symbiotic, or if you like, structural or close or qaribi, ek tarah ki jo relationship hai, is critical for between democracy and dissent, between jamhuriyat and ikhtilafiyat. So the symbiotic relationship is critical for democracy because it fosters a pluralistic public sphere. और ये तो हम सब लोग मानेंगे कि हमारा जो मुल्क है और हमारा जो समाज है वो मेरे ख्याल में दुनिया की सबसे ज़्यादा डाइवर्स और प्लूरल और मल्टी कल्चरल समाज है, और उसकी वजह से मीडिया को भी उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए. मगर अब जो हो रहा है उसमें हम सभी लोग देख रहे हैं कि शायद वो इतना ज़्यादा इस प्लूरलिज्म को नहीं रिफ्लेक्ट करता है. So when media amplifies dissent or differences or matbhed or ikhtilafiyat, it helps ensure that no single ideology or single idea or group or political thinking or ideology dominates the public discourse, thereby strengthening democracy's foundations. अब इसके बैकग्राउंड में अब हम देखते हैं इंडियन मीडिया का क्या हाल है और उसका क्या स्ट्रक्चर है और उसके क्या सिचुएशन है. तो इंडियन की मीडिया तो हिंदुस्तान में बहुत एक अहम कामयाब इंस्टीट्यूट. इस वक्त अगर हम लोग इंडियन मीडिया को और मुल्कों के मीडिया से कंपेयर करें तो इंक्लूडेड ये हिंदुस्तान की जमहूरियत की जो कामयाबी है, और बहुत मायनों में हमारी जमहूरियत बहुत कामयाब जमहूरियत है, उसकी कामयाबी की बहुत बड़ी वजह है हिंदुस्तान का मीडिया, उसकी विगर, उसकी वाइब्रेंसी. In fact, it is impossible to talk about Indian democracy without considering the major role played by the media in the promotion of democracy. In fact, a healthy democracy is predicated on the electorate making informed choices, and this of course depends on the information that we receive. अब सवाल ये है कि इस वक्त जब हम लोग बात कर रहे हैं 2023 में, क्या हम ये कह सकते हैं कि हम ये तो कह सकते हैं कि हमारा मीडिया अभी भी बहुत वाइब्रेंट है, मगर क्या हमारा मीडिया सारे जो हमारे मुल्क के अलग अलग कंसर्न्स हैं और अलग अलग लोग हैं, और ख़ास तौर पे जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, क्या उनके इंटरेस्ट को पूरे तौर पे आर्टिकुलेट कर रहा है, उनको जगह दे रहा है, उनको प्लेटफॉर्म दे रहा है या नहीं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है
हमारे सामने जो अब हम मीडिया का जो हाल देखते हैं. Historically, a vibrant media landscape has been the cornerstone of our democracy. India has had a tradition of free press for a long time, barring the period of the emergency from 1975 to 77. With thousands of newspapers and hundreds of news channels in several languages, we are spoiled for choice in this diverse universe of communication. However, I think more significant than the numbers in the media is the structure of ownership and the shift from government control, particularly in television, from government control to overwhelming private control. It was claimed in the pre-liberalization era that a privatized media would deliver choice and freedom of opinion. But even as the number of news sources has grown exponentially, the information given by these countless sources is often very similar. So what we see today is an unprecedented expansion of the media and at the same time an unprecedented narrowing of the communication space. And as a result, what we see then today is that press freedom has been declining over the past decade. And why is this so? If I may submit, this is because the Indian media, and I include both print and television media, is in the thrall of nationalist politics. And it is not just nationalist politics, but it is the nationalist politics of the ruling party, the Bharatiya Janata Party. I think the media is today very nationalist in its perspective. This is unusual because because media in most other countries are not as driven by nationalism, and in our case, Hindu nationalism, as they are in India. Now, of, if you will, the Hindu right on the Indian media. And this is also responsible, यहाँ कि vehicles पे लिखा होता है on government duty, कभी-कभी trucks पे और कितनी चीज़ों पे लिखा होता है, कितने vehicles पे हो, तो कभी-कभी मीडिया का भी ऐसे ही लगता है कि वो government duty पे हैं. और उसकी वजह से वो जो सच्चाई है वो बताने के लिए तैयार नहीं होते, ना सरकार को, ना हम लोगों को, citizens को या शहरियों को. तो ये इसके अलावा बहुत से और तरीक़े हैं गवर्नमेंट के पास जिसकी वजह से उन्होंने मीडिया को अपनी तरफ कर लिया है. और उसकी मेरे ख़्याल में दो तीन बहुत अहम वजूहात हैं. एक तो ये है कि कॉर्पोरेट कंट्रोल, दूसरा ये है कि गवर्नमेंट कॉर्पोरेट कंट्रोल की वजह से मैनेजमेंट्स के ऊपर अपना प्रेशर डाल के मतलब एडिटर्स वगैरह को बदलते रहते हैं. और तीसरे जिस तरह से वो तो हम लोग देख ही रहे हैं कि रेगुलेटरी बॉडीज़ का इस्तेमाल जो होता है मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस पे प्रेशर डालने का. मगर इसमें मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बिल्कुल नई है और बिल्कुल बदल गई है और जिसने पूरा मीडिया का तौर और तरीक़ा ही बदल दिया है, वो है corporate control. So one of the key concerns regarding the media has been the increasing concentration of media ownership in the hands of a few powerful entities with perceived affiliations to the ruling establishment. The rise of corporate conglomerates with close ties to the government has further exacerbated these concerns. The influence of these corporate interests on media content and editorial decisions has led to accusations of censorship or self-censorship. Now, we know very well that media ownership today is concentrated in the hands of a few, very few corporate houses, particularly visual media. And most channels are controlled by them, and both electronic and print media. And one of the reasons why this is so and why government is able to lean on them is because Indian newspapers are sold at a very cheap rate. For example, if you look at Times of India, the Times of India
is huge in terms of number of pages, but it is sold at a very cheap price, and they make up, and yet they make huge profits. And the reason they make huge profits is that the bulk of the newspaper is made up of advertisements, a combination of government advertisements and private advertisements. So the Indian model, unlike let us say print media in other countries, is an advertising revenue model. And so most media outlets rely heavily on advertising, and government advertising in particular, which can be used as a tool to reward favorable coverage. And we know in the past, in the recent past, for example, if you recall, before the 2019 elections, the Rafale controversy was a very major controversy in the run-up to the 2019 Lok Sabha elections. And English dailies, and one particular English daily, the Hindu newspaper, had carried a series of stories on Rafale and the sort of garbad in the whole Rafale deal. And soon thereafter, the advertisements to this English daily were cut off or considerably reduced because of the 6-part article that the Hindu had carried. And in fact, so rewarding or punishing the media then through the allocation or non-allocation of advertising is the most important tool. And this has clearly affected the independence of the media. But the point is that this process has compromised media independence. But it is very interesting, and this is a point that I want to make, that structure of ownership has changed to some extent, but not entirely, because even in the past, corporate sector controlled the print media. And also, I mean, there were many, many private channels too then. But the point is that same private media then, in the past, let us say before 2014, it was judging the Congress-led United Progressive Alliance government very critically. And they were primarily judging the government on the economy, on its economic performance, on policy paralysis, slow growth, and so on and so forth. But now, I think very interestingly, after 2014, most of the non-business newspapers don't seem to be so concerned about economic growth or about all of that. Their whole focus is on politics. And under this government, they're much more concerned in highlighting the political priorities of the ruling party rather than lack of progress in economic reforms, etc. So it is no coincidence that the issues that are debated today are the ones that the government is interested in and wants to be discussed. As a result, critical issues, or the most critical issue today is unemployment or joblessness, price rise, hate crimes, and so on. None of this really get the attention. Now, of course, we can understand that hate crimes will not get the attention they deserve. But what about joblessness, inflation, price rise? Even they are hardly ever the subject of debate, largely because the media is preoccupied with political controversies and political issues that the government is directly or indirectly interested in. And as I said, the corporate politics nexus is a major reason why this is so. But as I said a moment ago, the same corporate sector controlled the media 10 years ago as well. Then they were freely going after the government, whereas now the media readily accepts the government line. Why is this so? Surely corporate control can't be the only reason. I think the major reason that I hinted at earlier is that private capital, which dominates the media, has signed up to a project of aligning the media
with the ideological purposes of the state. That is the major reason. So basically, the media has been mobilized to capture public discourse, and in a way, the media is driven, is taken by national interest and whatever is the national interest, and the media looks upon itself as a guardian of national interest and a conscience keeper of the state, waging a battle against the enemies of the nation, principally those who disagree with the government. As Arvind Rajagopal, a very leading scholar of media studies, said, the media acts like a shadow state, acts like a shadow state, defining agendas and acting as judge and jury on issues of national importance or what they consider to be national interest, which is what the government considers to be national interest. He went on to say that many sadly have become, that is Arvind Rajagopal, and I'm quoting him, many sadly have become mouthpieces of official propaganda. Some do not think twice about even promoting religious polarization and even hatred in the pursuit of the political agenda of the ruling party. This brings me to the second point, which is how they are echoing the state. Now, how they're doing it is because even though the government claims that it is not particularly bothered about the media, and yet it is clear that controlling the media has been one of the top priorities of the current dispensation. In fact, they have actually established a new information order. That is a term that the political philosopher Pratap Bhanu Mehta has used. He says that this government has actually established a new information order which restricts, as he says, media's freedom to function. And controlling the media then is one of its major concerns. And this new information order, interestingly, also is not just flooding the media with speeches and information and speeches of the Prime Minister and so on. And we have all seen the way in which the media has gone overboard in reporting the G20 summit, which is still underway, which will conclude today. We can see the kind of reporting that has been done. I mean, I cannot call it anything other than breathless coverage of the G20 summit, which undoubtedly is extremely important, and undoubtedly the fact that India that it is happening under India's presidency is very, very significant, and the fact that there has been some agreement and some consensus on the resolutions that will be announced today are all very, very important. But at the same time, the manner in which it has been done, I think even Doordarshan could not, in its heyday in the 1980s or 1990s, could have done a more, as I said, a better job in projecting the government in the way in which the media is doing it today. So, as I said, control of the media certainly entails flooding the media with speeches and information to legitimize the dominant leadership. But I think interestingly, and this is a point that I think is worth noting, is that the new information order also depends on new news agencies. I don't know if most of you are aware. As part of the new information order, there's something which is quite interesting and worth noting, is the role of news agencies. So far, we've been familiar with two news agencies, the Press Trust of India and the UNI. But you may not be aware that, presently PTI and UNI are not the go-to news agencies for the government. In fact, Prasar Bharati
has signed a contract with Hindustan Samachar, and Hindustan Samachar is, and Prasar Bharati has actually cancelled its subscription with PTI. And Hindustan Samachar, many of you might know, relies essentially on RSS-backed news agents. Sorry, I should say that the Hindustan Samachar is essentially an RSS-backed news agency. In addition to this, Prasar Bharati and the government in general also depends on another private news agency that has come to the forefront, ANI, Associated News of India, owned by Smita Prakash. Now, these two agencies, that is Hindustan Samachar and ANI, are now favored by the government rather than PTI or UNI. And both agencies provide very positive news about the government. They are the agencies to which ministers give, especially the ANI, to which ministers give interviews and so on. So this is, I mean, this is the kind of new information order that has come into existence. Now, as I said, the media has also been, its functioning has also been affected, and I think we have again noticed this in the last 2 days. It has been affected by the closure of legitimate sources of information, such as press conferences and press briefings and correspondence being barred from accompanying the Prime Minister on official foreign visits. As we know, the Prime Minister does not hold press conferences. And the most interesting और एक जो बहुत दिलचस्प चीज़ पिछले 12-13 घंटों में या 24 घंटों में ख़बरों में आई और जिसके बारे में आज काफ़ी जिसका जिक्र है, वो ये कि जब अमेरिकन राष्ट्रपति एयरफोर्स 1 पे यहाँ आ रहे थे, तो वो तो जैसे पहले हिंदुस्तान में होता था कि जब प्रधानमंत्री बाहर के देशों में जाते थे तो उनकी जो प्रधानमंत्री का जो जहाज़ था उसमें सारे जर्नलिस्ट उसी में जाते थे, उसी जहाज़ में जाते थे। खैर वो तो उन्होंने बंद कर दिया, अब जो इस वक्त मौजूदा प्रधानमंत्री ने उसको बंद कर दिया, मगर जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं उनके तो जहाज़ में लोग आ रहे हैं, उनके तो जहाज़ में जर्नलिस्ट आए और उनका जो एक पूरा वो है प्रोटोकॉल है, उसमें ये है कि जब प्रधानमंत्री की उनके प्रेसिडेंट राष्ट्रपति की किसी भी और हेड ऑफ गवर्नमेंट से और ख़ासतौर पे एक इम्पॉर्टेंट हिंदुस्तान ऐसे इम्पॉर्टेंट मुल्क के प्रधानमंत्री के साथ बायलैटरल मीटिंग होगी, तो जैसे ही बायलैटरल मीटिंग ख़त्म होती है तो अमेरिकन जर्नलिस्ट को इजाज़त है कि जिस कमरे में मीटिंग हो रही है दोनों हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की, वहाँ वो सारे जर्नलिस्ट जाएंगे और 2-4 सवाल जो हैं वो दोनों ही हेड्स ऑफ गवर्नमेंट से करेंगे। तो ये तो बिल्कुल क्लियर था कि आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से तो नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा कि कम से कम हमको अंदर आने की इजाज़त दी जाए और हम अपने राष्ट्रपति से 2-4 सवाल करेंगे जो बायलैटरल मीटिंग हिंदुस्तान और अमेरिका के हेड्स ऑफ गवर्नमेंट में हुई। और इस पे जो आज रिपोर्ट्स आई हैं और वो इसलिए दिलचस्प हैं कि कई रिपोर्ट्स ने कहा कि ये पिछले 3-4 दिन से उनके यहाँ आने से पहले, जो बाइडेन के यहाँ आने से पहले से ये बातचीत चल रही थी और पूरे तौर पे जो उनके सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उनके जो प्रेस एडवाइज़र हैं, वो यहाँ के लोगों से इस पे बातचीत कर रहे थे, मगर बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये नहीं मुमकिन है। आप जो बाइडेन से भी बात नहीं कर सकते हैं बायलैटरल के बाद, और उस कमरे में जहाँ ये मीटिंग हो रही वहाँ अंदर जाने का तो कोई सवाल ही नहीं। तो फिर ये बाद में ये अनाउंस हुआ और शायद आप लोगों ने आज देखा होगा अखबार में कि ये तय हुआ कि आज रात को ही जब बाइडेन वियतनाम जाएंगे और उनकी एक विज़िट वियतनाम में है, वहाँ पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।
وہاں ظاہر وہاں تو کوئی روک نہیں ہوگی پریس. اب اس میں جو انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ نہ صرف آپ اپنے پروٹوکول طے کر رہے ہیں بلکہ ایک طرح سے آپ اور ملکوں کے بھی پروٹوکول طے کر رہے ہیں, کیونکہ آپ نے اور ملکوں کا جو پروٹوکول ہے اس کو, اور خیر امریکہ راضی ہو گیا اور میرے خیال میں صحیح بھی تھا, وہ راضی ہو گئے کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ بھئی جو یہاں کا پروٹوکول ہے ہمیں تو اسی سے چلنا ہے, اور جب یہاں کے پروٹوکول میں یہ اجازت نہیں دی تو میں نے آپ کو صرف یہ بات اس لیے بتائی کہ اس سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایکسیس, ہمیں یہ پورا جو ایشو ہے اور جو آج کل اور آج جو سٹوریز آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ میڈیا کا کس طرح کے کنسٹرینٹس ہیں, میڈیا ایکسیس پر کس طرح کے کنسٹرینٹس ہیں. اور پچھلے 2-3 دن میں ایک اور, پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھا یا نہیں, اخباروں میں ایک بہت سے میڈیا آرگنائزیشن نے ہندوستان میں مل کے, جیسے G20 ہوا ہے, انہوں نے کیا میڈیا 20, اس کا نام ہے M20, اور وہ ایک آن لائن انہوں نے جو بڑے بڑے دنیا کے اخباروں کے, نیو یارک ٹائمز, واشنگٹن پوسٹ, گارڈین اور ہندوستان کے اخبارات وغیرہ کے, اور ہندوستان کے جو آن لائن پورٹلز ہیں جیسے وائر, اسکرول وغیرہ, ان کا مل کے ایک M20 کی کیا اس وقت میڈیا ایکسیس کے کیا پرابلمز ہیں اور کیا مسئلے ہیں اور کیا مسائل ہیں M20 کے. اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ جو M20 جو آن لائن میٹنگ ہوئی, یہ جو کنٹروورسی پیدا ہوئی ہے کل اس کی پریس کانفرنس کے بارے میں, بائیڈن اور ہمارے پردھان منتری کے پریس کانفرنس کے بارے میں, یہ اس سے پہلے, اور ایک طرح سے اس M20 نے اس کو اینٹیسپیٹ ہی کیا تھا جب انہوں نے کہا کہ اتنے کنسٹرینٹس ہیں میڈیا ایکسیس پہ, انہوں نے اس کو ایکسیس اینٹیسپیٹ کیا تھا. تو مسئلہ یہی ہے کہ ایک تو پریس کانفرنسز نہیں ہوتی ہیں, منسٹرز جو ہے بہت کم انٹرویو دیتے ہیں, اور جب انٹرویوز دیتے بھی ہیں اخبارات کو یا ٹیلی ویژن چینلز کو تو وہ اپنے جو فیورڈ وہ ہیں وہ ANI کو دیں گے, وہ ٹائمز ناؤ کو دیں گے, وہ انڈیا ٹوڈے کو دیں گے, یا اب تو خیر NDTV کو بے انتہا دے رہے ہیں کیونکہ اب NDTV تو ان کے جب سے گوتم اڈانی نے اس کو ٹیک اوور کر لیا تو وہ تو ان کے کنٹرول میں ہے, تو اب تو وہ بھی ایک طرح سے فیورڈ چینل ہو گیا, مگر اس سے پہلے اڈانی کے ٹیک اوور سے پہلے تو وہ نہیں دیتے تھے NDTV وغیرہ کو. تو ایشو یہ ہے کہ دیکھیے گورنمنٹ کے پاس تو اتنے موقع ہیں, اتنی فیسلٹیز ہیں ان کے ڈسپوزل پہ جس کے تھرو وہ اپنی پالیسیز کو کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, اور ان کو میڈیا کو کنٹرول کرنے کی اور میڈیا کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو سرکار کو اپنے طور و طریقوں سے کمیونیکیٹ کرنا چاہیے وہ میڈیا کے کنٹرول کے تھرو کر رہے ہیں. اور ایک طرح سے میں نے پہلے کہا کہ میڈیا گورنمنٹ ڈیوٹی پہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے, اور جو کہ بہت لوگوں نے کہا ہے, مثلاً سدھارتھ وردراجن جو پہلے وائر کے ایڈیٹر تھے اور وہاں کے وائر کے فاؤنڈر ایڈیٹرز میں ہیں, انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ میڈیا جو ہے اب تو وہ میڈیا ہاؤسز جو ہیں وہ تو گورنمنٹ کے میگا فون بن گئے. اور میں نے جو پہلے آپ سے کہا گورنمنٹ ڈیوٹی کے بارے میں, وہ بھی ایک بہت اچھے جرنلسٹ ہیں آنند سہائے, انہوں نے ایک اپنے مضمون جو انہوں نے کسی اخبار میں شاید ایشین ایج میں لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میڈیا تو لگتا ہے کہ بالکل ہی انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ میڈیا گورنمنٹ کے ڈیپیوٹیشن پہ ہے, اٹس آن ڈیپیوٹیشن ٹو دا گورنمنٹ. تو یہ دونوں جو ہیں آنند سہائے کا کامنٹ اور سدھارتھ وردراجن کا کامنٹ, یہ ان اے وے ایک طرح سے سم اپ کرتا ہے اور آرٹیکولیٹ کرتا ہے جو پرتاپ مہتا نے کہا کہ بالکل ایک نیا انفارمیشن آرڈر بن گیا ہے جو پہلے نہیں تھا, اس کے باوجود کہ پہلے بھی میڈیا بہت حد تک پرائیویٹائز تھا, مگر میڈیا اس وقت جتنا گورنمنٹ انفلوئنس میں ہے اتنا تو دوردرشن کے زمانے میں بھی شاید دوردرشن نہیں تھا. اور تیسری جو بہت دلچسپ ایسپیکٹ ہے ہندوستان کے میڈیا کو جو اور میڈیا سے بالکل مختلف ہے, وہ یہ ہے کہ میڈیا جو ہے کرٹیکل تو ہے, مگر میڈیا جو ہے وہ گورنمنٹ کا کرٹیکل نہیں ہے. میڈیا کا ساری جو تنقید
या जो सारी जो क्रिटिसिज्म है वो ऑपोजिशन की तरफ डायरेक्टेड है। अब ये अगर आप कहीं भी किसी भी मुल्क का अखबार उठा के देखें, अब हमने जो अंग्रेज़ी के और मुल्कों के अखबार देखे हैं उनमें ये तो हमने पूरा फोकस अखबारों का होता है गवर्नमेंट को मॉनिटर करने पे, ऑपोजिशन को मॉनिटर करने के लिए तो नहीं होता है। यहाँ पे तो मीडिया जो है इट इज़ एन जैसे क्लास मॉनिटर होते थे स्कूल होते हैं स्कूल में, यहाँ मीडिया जो है ये तो बिल्कुल ऑपोजिशन का मॉनिटर है। सो द मीडिया देन डायरेक्ट्स मच ऑफ इट्स क्रिटिसिज्म at the opposition and it functions as a watchdog of the opposition, और साथ साथ सिर्फ opposition को मॉनिटर नहीं करता है बल्कि एक चीज़ जो आप लोगों ने देखा होगा और बहुत दिलचस्प चीज़ है कि सिर्फ opposition की शिकायत और उनकी तनकीद ही नहीं करते, बस उसके साथ साथ उनमें जो मतभेद हैं, जो उनमें डिविजन्स हैं। अब मसलन NDTV को आप देखिए, अब NDTV जब से अडानी ने उसको टेक ओवर किया, एक जो बहुत नुमाया बात है NDTV की वो ये है कि ठीक है वो शायद अभी भी और चैनल्स के मुकाबले में थोड़ा सा अंडरस्टेटेड हैं, थोड़ा सा अंडरस्टेटेड, मगर वो उस अंडरस्टेटमेंट को का मेकअप कॉम्पनसेट कर देते हैं कि उनका हर रोज़ जो है एक प्रोग्राम ज़रूरी है ऑपोजिशन डिविजन्स में। और ख़ास तौर पे जब से ये इंडिया ब्लॉक बना, इंडिया ऑपोजिशन ब्लॉक या अलायंस, इंडियन नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, जिसका नाम इंडिया है, जब से ये बना और इसका नाम अनाउंस हुआ ये बेंगलोर की मीटिंग में, उसके बाद से तो पूरा फोकस है कि ये एक डिवाइडेड हाउस है, ये चल नहीं सकता है ये अच्छा तो अगर इतना डिवाइडेड हाउस है तो आपको इतनी तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि ऑपोजिशन है नहीं, गवर्नमेंट इज़ ऑल एंड ऑल, ऑपोजिशन है ही नहीं, ऑपोजिशन इतना कमज़ोर है और जो है वो इतना डिवाइडेड है। तो अगर इतना कमज़ोर और इतना डिवाइडेड है तो आपको उसको इतनी तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं। मगर बात यह है कि सारा डिस्कशन जो है रात को 9 बजे के बाद या 8 बजे के बाद जो होता है वो सिर्फ ऑपोजिशन पे होता है, गवर्नमेंट के ऊपर तो होता ही नहीं है। और इसमें ऑपोजिशन में ये एक और चौथी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट और दिलचस्प है वो ये है कि न सिर्फ ऑपोजिशन के ऊपर फोकस है मगर उसमें सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर है। और सारे जो मुश्किल सवालात हैं मुल्क के बारे में और मुल्क की फ्यूचर के बारे में वो कांग्रेस से पूछे जाते हैं, गवर्नमेंट से नहीं पूछे जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी से नहीं पूछे जाते हैं, कांग्रेस से सारे सवालात पूछे जाते हैं, और ख़ास तौर पे राहुल गांधी से बिल्कुल। और उनको तो बहुत ही ख़ास अटेंशन हमेशा मिलती है टेलीविज़न चैनल्स पे, और बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कि जैसे राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं और वो ही जो हैं एक तरह से अकाउंटेबल हैं, उन्हीं को वो ही जवाबदेही हैं गवर्नमेंट के। तो इसलिए इसकी मतलब इस बात का लुब्बे-लुबाब जो है वो यही है कि जो गवर्नमेंट के पॉलिटिकल अपोनेंट्स और राइवल्स हैं उनको तो आप सुबह शाम डिनाउंस करिए, और जो रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और जिसके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, ये कोई कोalition गवर्नमेंट नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी, या जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की भी कोalition गवर्नमेंट थी तो उसकी कुछ कंस्ट्रेंट्स और वो थे प्रॉब्लम। ये तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, 303 सीट्स हैं और उनके एलाइज़ को मिला के तो तकरीबन 350 सीट्स हैं। तो उनकी जो जिम्मेदारियाँ हैं उसके बारे में तो कोई सवाल नहीं होते हैं, उसकी तो कोई जवाबदेही नहीं होती। सारा जो है क्रिटिकल आई जो है वो गवर्नमेंट पर ही रहती है। तो जैसा मैंने और इसकी वजह से और जैसे ये पहले नहीं था, बल्कि मुझे एक बात जो पहले कहनी चाहिए थी, जब मैंने कहा कि पहले भी प्राइवेट ओनरशिप थी, तो उस वक्त तो आपको याद होगा जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का एंटी करप्शन मूवमेंट 2011-12 में हुआ था, तब तो 24/7 सारे टेलीविज़न चैनल्स खाली अन्ना हज़ारे आंदोलन पर रिपोर्टिंग और चर्चा करते थे। वो ये पूरा सिलसिला 1 साल चला जब तक कि गवर्नमेंट बिल्कुल कमज़ोर हो गई और इन अ वे गिर गई। तो
ये कहना मेरे ख़्याल में एग्जैजरेशन बिल्कुल, मुबालगा बिल्कुल भी नहीं होगा कि मीडिया का एक बहुत अहम किरदार था पिछली सरकार को कमज़ोर करने में। उनकी अपनी जो खामियां हैं, उनकी गलतियां हैं, वो तो हम सबको मालूम है, हम सब लोगों ने उसके बारे में पढ़ा है, लिखा है, डिस्कस किया, वो तो खैर वो तो है ही है अपनी जगह पे। मगर उसमें मीडिया का भी अच्छा खासा अहम किरदार था। और इसकी वजह से जो इस वक्त इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं, मसलन चाइनीज़ इनकर्जन इन लद्दाख, या ये कि कोविड में जो मैनेजमेंट या मिस मैनेजमेंट हुआ, या एक और बहुत बड़ा इशू है, अगर आप WHO की रिपोर्ट देखें तो WHO जो कहती हैं कि जितनी मौतें हुई, डेथ्स हुई, वो जो ऑफिशियल फिगर्स हैं वो उसको अंडरस्टेट कर रही हैं। मौतें जो हुई इसमें ये कोविड के दौरान वो बहुत ज़्यादा हुई, तकरीबन 4-5 गुना ऑफिशियल फिगर से ज़्यादा है। मगर इसका तो हमने तो कहीं पर भी डिस्कशन नहीं देखा, सिवाय थोड़ा बहुत ऑनलाइन पोर्टल्स पे ज़रूर इस पे कुछ मजमून शाया हुए, मगर इस पे कोई मेन स्ट्रीम मीडिया में तो इसका कोई भी नहीं। और तीसरी जो बहुत ही एक बड़ा इशू था वो था डीमोनेटाइजेशन। और डीमोनेटाइजेशन का जो हुआ वो तो हम लोगों को मालूम ही है, जो क्लेम किया था वो तो कुछ ना हुआ, मगर उसके जो इकनॉमिक नुकसानात हैं वो तो हम सब लोग देख ही रहे हैं। जैसा कि पहले कहा गया था कि इसका इकनॉमिक ग्रोथ पे, GDP पे असर होगा, और वो हुआ। और जैसा कहा गया था कि इसका 1-2% हिंदुस्तान का GDP डीमोनेटाइजेशन की वजह से और उसका जो इनफॉर्मल सेक्टर पे उसका जो डिज़ास्ट्रस इफ़ेक्ट होगा उसका असर होगा। और अभी भी शायद अब पिछले 1 साल में इकॉनमी ने डीमोनेटाइजेशन के इफ़ेक्ट से रिकवर करना शुरू किया है। मगर ये जो पूरे पिटफॉल्स थे डीमोनेटाइजेशन के, इसका तो बिल्कुल भी कोई जो कुछ जब डीमोनेटाइजेशन हुआ 2017 में, उसके बाद से इसके ऊपर तो कोई डिस्कशन हुआ ही नहीं। बल्कि क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने हाल में जो एक उनका वर्डिक्ट आया जिसमें उन्होंने एक अपहोल्ड किया है डीमोनेटाइजेशन, तो उसके बाद तो बात बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। सो इफ़ेक्टिवली जो है जो असली मुद्दे हैं उन पे तो कोई डिस्कशन होता ही नहीं। और एक मैं आपको बताऊं, इसकी वजह से ये बिल्कुल क्लियर है। अगर आप देखें, एक सर्वे किया है लोकनीति ने। ये लोकनीति एक संस्था है, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़, जो दिल्ली में है, जो एक अच्छी इम्पोर्टेंट सोशल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। तो उनके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है लोकनीति, और वो इलेक्शन पे ख़ास तौर पे काम करते हैं। तो उन्होंने एक रिपोर्ट शाया की जिसका नाम है मीडिया इन इंडिया, ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स अक्रॉस मीडियम्स। एंड दिस लोकनीति report shows that 3/4 of journalists surveyed for this study believed that media organizations favor the present ruling party. Among English news organizations, 4/5 of journalists surveyed said news media organizations generally favor the BJP. 80% felt that media always portrays the BJP government in a favorable light and provides unfavorable coverage of opposition parties. On the freedom of press, the Lokniti survey found that 72% of respondents that they interviewed said news channels are less free today to do their jobs. Now, this is exactly what has been the burden of my argument, and this report essentially confirms what I have been arguing, and has done so on the basis of a fairly big survey. And this report, Lokniti report, was published, I think, just about a couple of months back. I think it was published in the month of July. You can see it was it was not published, of course it was not widely discussed on mainstream news channels or mainstream media, but surely you will find it in the online portals and websites. Now,
The fourth interesting thing that I want to come to before I conclude is two things before I conclude. One is that clearly, I mean, the story of the Indian media today is very different from the story of the Indian media, let's say, 10 years ago. It is less free and more pro-government. But there is a positive and new development, and that new development is that social media platforms have to some extent leveled the playing field, which was previously dominated by the right wing. I mean, while the government can count on mainstream media, it cannot count in the same way on digital platforms. And as a result, right now, government's entire focus is on finding ways and introducing new laws to regulate social media, because digital platforms such as the Wire, Scroll, News Laundry, Alt News, Caravan, People's Archive of Rural India, Pari, Khabar Lahariya, and so on, have tried to fulfill the role that an independent press is supposed to do in a democracy. These portals are relatively more independent because most of them, in fact, almost none of them, depend on corporate funds. Many of them depend on crowdfunding. For example, News Laundry, even Wire to a large extent. I do not know about other portals, but I presume the other portals do also ask for donations and crowdfunding. So the effort, therefore, now is to control digital media, including social media, and this takes the form of codes of conduct for online media, including intermediaries, news sites, and even OTT, over-the-top platforms such as Netflix and so on and so forth. And that is why I think we have noted in the last few months or last year or so that there have been new controls on social media and on online, and there are restrictions in the form of codes of conduct for online media, restrictions on foreign direct investment, and so on and so forth. And I think most of you would have read that Twitter has been regularly, well, Twitter now called X, has been regularly pressured to restrict or ban content which is critical of the government. In fact, in 2022, Twitter staff was warned over their refusal to ban accounts run by critics of the government. Apart from this, and I think this is again, this is another new proposal that the government has come up with, and that is that there will be fact-checking, but the fact-checking will be done by a government organization, which is the Press Information Bureau. And they will now do fact-checking. Now, this has been, I mean, most of the media, including mainstream media, has expressed concern and criticism about this particular move. Apart from this, and I think this is again another important thing to note, that while India has the world's largest digital population following China, with more than 800 million internet users, but it also has a very large number of internet shutdowns. And in fact, you might note that over 70% of world's internet shutdowns are recorded in India. In fact, internet shutdown was rampant in Jammu and Kashmir, but we have noticed recently in the past 3-4 months, since an ethnic conflict broke out in Manipur, there was internet shutdown in Manipur for a very, very long time. Of course, the government denies this, but by and large, it is well known that internet shutdown, any time any kind of protest takes place, there's an internet shutdown. For example, during the farmers' movement, and most of you would have been aware, since Haryana was a major site or participant in the farmers' movement, or before that,
the anti-CAA protests, the Citizenship Amendment Act protests all over the country. There were internet shutdowns to stop communication or news about protests. So all of this then, and this brings me to the second point that I wanted to make before I close, and that is that the overall purpose of all this is narrative control. That is their principal concern, and well before the 2024 elections, which are still 8 or 9 months away, there's direct pressure to propagate the government narrative. And I think the takeover of NDTV earlier this year was part of this whole effort at narrative control. And any critical scrutiny of the government then, or any editor who fails to fall in line, is really subjected to harassment or even FIR, defamation cases, sedition cases. And the latest that some of you would have been noted are the FIRs that have been lodged against the Editors Guild of India. The Editors Guild of India sent 3 senior journalists to Manipur on a fact-finding mission to assess the ethnic conflict there and the way in which the media in Manipur had reported that conflict. They published that report, 25-page report, and soon thereafter, the Chief Minister of Manipur gave a press conference, and FIRs have been lodged against the 3 journalists who wrote that report and also against the president of the Editors Guild. Now, I think we all know that the Editors Guild of India is an extremely important media institution. It's an extremely important media institution. It is an independent institution. It has never been aligned to any government or to any ideology or any thinking. It is autonomous, it is independent, and very senior, distinguished journalists have been associated with it, have been the presidents of that organization, and yet an FIR has been lodged against the president of the guild, Editors Guild, as well as the 3 journalists. You would also recall the fate of the BBC documentary on Gujarat. Now, formally, it was not banned, but effectively, it was sort of not allowed to be, it was not permitted to be shown. So, in short, there is clearly an attempt to decide what the media will say, what the media will report, and how the media will report it. Now, given this state of affairs, it is hardly surprising that in a comparative perspective, comparative rating of press freedom, India is edging closer to the bottom of the list. It is 161 in a list of 170 countries. So India ranks poorly, and not 170, of the 180 nations that have been surveyed in the World Freedom Index in 2023. India was placed 161, and that is perhaps the lowest ever rank in the World Press Freedom Index. And likewise, there's another organization which looks at censorship, and that is called Index on Censorship. They too have found that there's escalating repression in India, and has stated that the structures of democracy have been weakened, which have affected democracy's functioning, and that the Indian media is, the point I made in the beginning, that Indian media is eager to demonstrate how nationalistic and patriotic it is in order to curry favor with the ruling party. So in conclusion then, I think the state of press freedom in India that I've just mentioned is an indication actually not just of press freedom, but also of the state of democracy and dissent in India. At the heart of these challenges, and this is my central argument, at the heart of these challenges lie the politics of the ruling party and its growing authoritarianism and majoritarianism fueled by political and ideological agendas.
And the four major targets of this politics, this authoritarian, majoritarian politics, are number one, the Muslim community, which is right on top, civil society, opposition parties, and the media. Today we are focused on the media, but in a way it is linked to the other three that I've just mentioned. So the might of the Indian state then is used against its critics, whether by muzzling the media or harassing its critics or academics or activists. Now, the control of the media is not new. It echoes the muzzling of the press under Indira Gandhi during the emergency. But in those days, but the politics of the emergency was political repression. There was no ethnic dimension. There was no communal dimension to Indira Gandhi's politics. There's a fundamental difference between the politics of Indira Gandhi during the emergency and the media control then, and the politics of this regime and its media control. And I think this is because a large section of the media has fused itself with the ruling power vertical and its ethnic communal politics, which accelerates authoritarianism and democratic decline, which has been noted in so many commentaries and which many of us sitting here are fully aware. What this means is a loss of pluralism, and this poses a threat to the pluralism of the media, which is essential for democracy. It poses a threat to diversity of news. Now that hurts democracy because as citizens we are underinformed, uninformed, and ill-informed. So it is not just the independence of the media that is compromised. It is also that large segments of the population, citizens, are no longer receiving unbiased news and information. The media is currently delivering what the government wants the public to know rather than focusing on facts and reality. It's in this sense that I've argued in this lecture that democracy, media, and dissent are intertwined forces that uphold the principles of transparency, accountability, and free expression. They're essential for a thriving democratic society. To ensure their continued vitality, it is imperative to address the challenges they face today, such as media ownership, such as media consolidation, disinformation, fake news, censorship, and self-censorship. A diverse and independent media ecosystem, coupled with the vibrant culture of dissent, will fortify the foundations of our democracy and enable citizens to engage in informed, meaningful dialogue about the issues that shape our society. As we navigate the complex media landscape of the 21st century, preserving the relationship between media, dissent, and democracy is more crucial than ever before in India. Thank you. बहुत बहुत आभार और बहुत ही शानदार और बहुत ही गंभीर तरीके से और बहुत ही वेल स्टडीड, बहुत ही अध्ययन के बाद कही गई बातें और उनका स्ट्रक्चर भाषण का बहुत अच्छे ढंग से किया। मेरे को 30 साल हो गए पढ़ाते हुए। मेरी ये इच्छा हो रही थी कि काश मैं भी इनकी क्लास में बैठकर पढ़ सकता। तो ये हमारे में से बहुत लोगों की ये भावना रही होगी। बहुत धन्यवाद मैडम आपका कि आपने बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे साथियों को जो दूर दूर से आए हैं, रोहतक से, हिसार से, अम्बाला से, बड़े विद्वान लोग हैं यहाँ पर, बड़े बड़े लेखक हैं, प्रोफेसर हैं, अधिकारी हैं, विद्यार्थी हैं,
اور संगठनों में काम करने वाले लोग हैं, किसान हैं, मज़दूर हैं और यूनियंस में काम करने वाले लोग हैं, एकेडमिक्स में काम करने वाले लोग हैं, स्कूलों के अध्यापक हैं, तरह तरह की यहाँ पर ऑडियंस आपके पास सुनने के लिए आई और मुझे उम्मीद है कि ऑडियंस ने भी इसको रिसीव किया होगा